तो गेट्स वगैरह में आजकल हम देखते हैं कि वी एंटर एंड दे ऑटोमेटिकली ओपन, इवन द लाइट्स हैव देम। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सर वायरलेस चार्जर भी अवेलेबल होता है जिससे कि वहाँ पे भी यूज होता है वायरलेस सेंसर का। वेरी नाइस वेरी नाइस, है ना, बिना तार के हम चार्ज कर पा रहे हैं आज के डेट में। करेक्ट। सो वी आर नॉट यस सर, सपोज सर वायरलेस ईयरफोन्स भी होते हैं। वायरलेस ईयरफोन, वेरी गुड, ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दिया और वो आपका है ना जो भी बातें हो रही हैं और कहीं पर यूज़ कर सकते हैं। तो सैटेलाइट्स में आल्सो यूज। हाँ ठीक है, सैटेलाइट तो बाय डिफॉल्ट वी कैन नॉट आई मीन यूज वायर एंड इन ऑर्डर टू कनेक्ट वन कंट्री विथ अनदर, तो ठीक है, सैटेलाइट में तो एकदम सही बोला आपने, वायरलेस का ही यूज़ होगा, बिना तार के ही सारी चीज़ें होंगी। करेक्ट। और कोई एप्लीकेशन जहां हम लोग उसको डिप्लॉय जहां हम लोग यूज़ कर सकते हों? To measure environmental temperature, humidity वगैरह। राइट, वेरी गुड। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीज़ें के लिए भी हम लोग कर सकते हैं। वेरी नाइस। द सिक्योरिटी पर्पसेस आल्सो। सिक्योरिटी पर्पस के लिए, तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए कहाँ पर यूज़ करेंगे उसको? So if we are monitoring an area, then we can sense whether somebody has entered the area, has left the area, if somebody is there. Okay, so she's saying कि somebody is there, like we are sleeping and suppose some sensors are there, so immediately the buzzer will start, I mean, and suppose some activation of buzzer is there, so we are able to understand that somebody is there, some intruders are there, isn't it? So that can be Yes sir, sir it works in this way only. right. So immediately we are going to be alerted by that buzzer if something is really happening wrong, and immediately we are going to go for that check. Correct. So there also we can use that. सर लाइक अटेंडेंस सिस्टम में भी यूज हो सकता है सेंसर। Attendance, सब वीडियो बेस्ड होता है ना, वीडियो बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम। video based, correct. Yes. Like the attendance that we are really doing in a kite also, so without Yes. right, without touching anything, just by I mean recognition of our face, है ना? So sensors are there, I mean cameras are there, which is going to capture the video, and ultimately they are going to go for some sort of your video matching, है ना? Image processing is there, so by using that image processing software, they are going to analyze that this is the legitimate user, and then they are going to put the attendance, and then accordingly it is going to be taken care by using that time stamp, isn't it? And attendance is going to be marked. Correct. Very good. So any more सर जैसे वो फास्ट वाला एग्जांपल बताया था मैंने लास्ट टाइम की RFID टेक्नोलॉजी यूज करके वो ले लेता है टैक्स, तो सर वो भी इसमें ही आएगा वायरलेस सेंसर में? exactly, you may say that some sensors are there, that is, in that case we are going to use this wireless RFID, which is going to use radio frequency in order to go for this. So you may consider that RFID without using wired, and without using wire we are able to sense the thing, we are able to capture the 2D barcode. Correct. It may be your QR code, or it may be two-dimensional. QR code is also two-dimensional barcode. So that can be also added as counted as one of the advantages. Correct. So any more advantages according to you? So in कोई medical आपको- fields also for patient monitoring. Exactly. For patient monitoring, in medical also we are using that. So in agriculture also these days we are using wireless sensors. Fine, very good. In agriculture also we are using that. Correct. तो कहाँ agriculture में where we are using that? So suppose we have to मतलब जैसे फील्ड को वाटर करना है उस टाइम पे यूज करते हैं, वो उसका मॉइस्चर वगैरह सेंस करेगा जो सेंसर है।
The soil humidity also is sensed using sensors. Yes, Okay. and So you are moisture. nice, very good. So you are saying that some sensors are there, which is really working on the context of your humidity or temperature, and accordingly, it is going to start. I mean, putting water in the field. And if humidity is low, that means low Yes, content, right? Low content of water is there. So in that case, automatically the tap or pump will start, and automatically that field is going to be irrigated. Correct. ठीक है, that may be one of the field. Correct. ठीक है, तो सही बताया। और कोई भी फील्ड हो सकते हैं इसमें? ऑलमोस्ट काफी कवर कर लिया आप लोगों ने। सर लैंडस्लाइड्स में भी हो सकता है। किसके लिए? सर लैंडस्लाइड डिटेक्ट करने के लिए। लैंडस्लाइड, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो लैंडस्लाइड के लिए व्हाट टाइप ऑफ सेंसर यू आर गोइंग टू यूज? इट इज प्रोएक्टिव। हाँ हाँ, एक्टिव होगा कि प्रोएक्टिव होगा? आई मीन टू से पहले ही। अच्छा, लैंडस्लाइड के पहले पता चल जाएगा आपका तो कहना? सॉइल लूज होगी जैसे, तो वो थोड़ा सा अवेयरनेस के लिए वार्निंग दे सकता है। ओके ओके ओके, करेक्ट है ना। सपोज समथिंग इज देयर, सम लैंडस्लाइड हैज जस्ट स्टार्टेड, so based on suppose the weight that you're going to put, or based on some clarification, or based on suppose radiation, you are going to identify that some landslide has occurred, and immediately it is going to put some alarm that be alert in that particular area. Correct, may be used. Correct, very good. Now for I mean, sending the data that some landslide is that may I mean, it is going to happen in near future, है. So in that way you may give some alarm. Fine. Correct. So in agriculture also the ratio of NPK measurement can be done using sensors. Correct, correct. So NPK, I mean, you are talking about the nutrients, nitrogen, yes, soil nutrients, phosphorus. Yes, yes, yes. Correct. So nitrogen, phosphorus, what is the content? So based potassium. on the potassium, correct. So based on the, I mean, sensor, I mean, we are going to deploy the sensor in that way. So based on that nutrients, whether nitrogen content, phosphorus content, or potassium content, whatever it may be. So based on that, you are able to identify these contents are a little bit less, or it is ample amount of nutrients are there, है ना? Then you are going to identify it is required or it is not required, and accordingly you are going to take some step. So this is, अच्छा, the screen is not visible ना? ये screen दिख रहा है ना? नहीं, अभी share नहीं किया। No, sir. Just wait, just wait. Okay. So I think now it is visible. अब दिख रहा होगा बच्चों? Okay, okay. So some of the applications are elaborated here also. So might be able to see that I mean, some fire sensors are there. Again, this is related with your temperature. So it is going to go beyond some threshold. Immediately, it is going to put some siren. And at the same time, the entire your sprinkler is there, that is there on the top of the floor. So that is going to be broken by using that, what do you call, mercury, isn't it? Some mercury is there. So immediately that mercury is going to be broken in that particular part, and I mean this, immediately the water is going to be taken care from that particular pipe. So it is the watering will be start, and it is going to put down this temperature of that particular area. If suppose some fire is there, so that is all about your temperature sensor, isn't it? So I think this screen is visible. So here we are going to monitor the fire. So fire monitoring is taken care by that sensor. Fine. And immediately, suppose that sensor is connected with some of the nearby server, by using that IP mapping. So we are able to identify that this particular server is placed in that particular area, or by using GPS also we can identify that area, and ultimately it is going to be taken care of. So when I went in USA, United States of America, in 2008, so there also
in every room, in every house, that sensor is there. And so one of my uncle, that he started, putting, he took one of the paper and he started, blowing nearby that sensor. So I said, what you are doing later on? So he said, some burning of the toast was there. So that gas is going to be sensed, and immediately the fire brigade will come in that particular area. If that house has not caught fire, so in that case they are going to charge some dollars. So he is supposed to give $200 if fire is not there. But if fire is there, obviously he is not supposed to give any bug to that particular person. So that very strict rules are there, and it is compulsory to put sensor in their houses, because the houses are, most of the houses are made of wooden, and because of that snow and all that, isn't it, in that United States. So I was there in Maryland. So there they are using this sensor concept practically from the very beginning. So I went there in 2008. So they are using that. Clear? So in habitat monitoring also, some habitats are there. So are you able to see this habitat is there? Some intruders are there. So it is going to identify that some problem is there, and immediately it is going to give some alarm. Maybe, that may be your sound sensor, and some firings are happening or something like this. So immediately it is going to give some alert message. Fine. Next, somebody talked about this healthcare. So healthcare is also one of the important part of your important place where we can use that sensor, and in order to monitor your suppose heartbeat, and monitor your blood pressure. So lot many different this part is there which is going to be monitored on your daily basis. So the things are happening with your sensor, isn't it? So your smart watch is there, you are wearing your smart watch and you are running. So it is going to tell how much calorie you have burnt. Clear? What is the blood pressure right now? So these things are going to be monitored. So this in healthcare also, these sensors are deployed. It is being used nowadays. Correct? Okay. Okay, fine. Next. Fine. So next is all about agriculture. You talked about some agriculture, that's in agriculture also we are using this, isn't it? So like suppose some sensors are there which is going to capture humidity, and which is going to capture the temperature. So accordingly, and it is going to start watering in that field. Clear? So these are the different aspects. So water actuator. So according to your requirement, and this is going to take some step. Clear? Some action are going to be taken care. So you are going to go for some acquisition of the data, and after acquisition of the data, that is going, suppose it is going to be deployed in that cloud, and from there all the apparatus are connected, and from that particular part you are able to identify that something went wrong, and from cloud it is going to give the signal to nearby server, and immediately you are going to get the information to your own place, isn't it? Fine. So now this can be deployed in home automation also. So most of you might have used that sensor, and I suppose your light is going to be dimmed, and some threshold is there. So suppose your luminous intensity is going to go down. So immediately by using that sensor, it is going to glow. Even though if you are not there in the room, if that sensor is there, so automatically it will be lighted up. The light will glow by using that sensor. So you are not supposed to switch on or switch off the light. Even though you are not there in the evening time, when the light become dim, your bulb will glow. So lot many sensors are there. In Amazon also, you are going to get that sensor, that I think it is around about less than
300 rupees you are going to get that sensor. It is there in Amazon. Even if you are going to put your hand on the sensor and the light, it is going to be dim, immediately you are going to see some light is glowing up in that by using that sensor. So these are coming, the sensors are basically used in that particular context. Clear? In home automation, I mean to say in home automation, you are going to use that. Clear? Even nowadays, I mean, timers are also there. Based on the timer, and automatically it is going to give the signal to that power, this one, and immediately it is going to switch off. You can set timer in your air condition, your television, and a lot many, I mean, different things are there. So it can be used in your home automation. So that we have already seen. Now this picture shows that this can be also automated. So every now and then the person is not supposed to be there in your house to take the reading of your electricity, or they are not going to take the reading of your suppose IGL and all that. So that is going to give the signal to the nearby server, and from there itself the things are going to be taken care of. And you are going to get the bill on your mail that this amount is supposed to be given from your side, isn't it? But in that case, they are going to put the sensor. Nowadays, I mean, most of the houses are not having that. So we used to give the pic of that particular thing in that app designed by this IGL. And from there, they are going to extract this number. Now, some numbers are there, some readings are there that you have used this unit of your gas or this unit of your electricity. From there, they are going to recognize the character, and by using that character recognition, they are going to extract that number, and they are going to give the billing on your required email ID. Give an email ID, isn't it? So I mean, in different area, basically we are deploying that. We are using that sensor, and it is really very, very helpful in this current scenario. So for putting these devices also, we are going to use that sensor that we have already seen. Some numbers are there, but using that numbers, we can use that. Even in traffic control also, they are using, I mean, how many different cars are moving from one part to another part. Even suppose something went wrong or some accident has taken somewhere in a particular area. So immediately by using that number plate, they are going to identify the entire thing. And immediately by using the number plate, they are going to map with your RC, registration certificate, and they are going to trace your address. And the information will be given to your near and dear person who is there nearby your particular area. So not many things are really going on, and some of them are going to be implemented in your smart city also. Okay, IoT based technology. So these were some of the I mean application that we were using in your we are using in your current scenario. Clear? So in cyber also we are using, in traffic also we are using that, in medical also. Somebody told about something about your monitoring of your health by using sensor. So in many of the places we are using that. Related to your earthquake also we are using that sensor. It's going to give not only this. Nowadays the civil engineers are using that sensor. They are deploying the sensor I mean on the bridge itself, inside the bridge itself, while creating that particular bridge, they are putting some of the sensor, and that sensor used to give the, I mean, some sort of your Young's modulus, that is stress by strain. So some sort of your I mean life is given by this. So it is going to give some alarming situation if the I mean if that particular bridge is not going to carry such a big load. So it is going to give some alarming that is going to be some alarming situation, and immediately we are supposed to, I mean, modify or rectify the entire this bridge. We are supposed to take care of that bridge. So there also they are deploying the same. हाँ बोलिए सर मेट्रो कार्ड जो हम यूज करते हैं सर, उसमें भी तो यही चीज होती है. Which card?
सर मेट्रो कार्ड, सर मेट्रो जब कार्ड। वहाँ पे एंटर करते हैं तो वहाँ पे मेट्रो कार्ड लगाते हैं, उसके बाद ही वो गेट ओपन होता है जाने के लिए। तो सारी जो हमारे जहाँ तक का जितना रूट होता है उसका जितना फेयर होता है उस अकॉर्डिंग वो कट जाता है हमारे कार्ड से ही। अच्छा अच्छा अच्छा, जो ईस्टर्न पेरीफेरल और ये सब बोल रहे हैं ना, जो yes, जो ऊपर ऊपर से आते हैं, सो यू आर गोइंग टू इमीडिएटली दे आर गोइंग टू चार्ज। जैसे आप घुसे है ना, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे आर गोइंग टू टेक द रीडिंग, है ना, वहाँ पर आपका सेंसर्स लगा हुआ है, वहाँ से ले लिया, एंड दे आर गोइंग टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कैलकुलेट हो गया है। सो एट द टाइम ऑफ एग्जिट दे आर गोइंग टू चार्ज द अमाउंट, है ना। यस यस यस। वेरी गुड। हाँ, यहाँ वहाँ पर भी हम लोग कर सकते हैं और करते भी हैं, यूज़ भी हो रहा है आज के डेट में, है ना। तो आज की डेट में यूज़ भी हम लोग कर रहे हैं। वेरी गुड। तो वहाँ पर डिप्लॉय किया है हम लोगों ने। ईस्टर्न पेरीफेरल वगैरह जो है आपके ऊपर ऊपर से जो रास्ते जा रहे हैं ना, जैसे दुहाई में उतरना है, आप पानीपत सोनीपत से आ रहे हैं, सो इमीडिएटली दे, आई मीन द मोमेंट यू आर गोइंग टू एंटर फ्रॉम देयर, दे आर गोइंग टू हैव दैट पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प एट द सेम टाइम, है ना। योर एंट्री हैज़ बीन मार्क्ड एंड दे ऑलरेडी नो व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम दैट प्लेस टू दैट प्लेस, एंड इमीडिएटली दे आर गोइंग टू चार्ज कि भाई वहाँ से आपकी एंट्री थी, है ना, बाय यूजिंग दैट सेंसर, बिकॉज nobody is there that the person is going to take the reading and all that, isn't it? So immediately it is being sensed and at the other end they are going to charge कि देखिए आपका इतना distance था and per kilometer this is the rate and accordingly you are supposed to pay this amount, isn't it? तो ये सारी चीज़ तो ठीक है, these are the applications। ठीक है, coming back to your since we are going to have some more, एक बहुत अच्छा पीपीटी मैंने वहाँ से लिया था आपके नेट से, तो ये जस्ट लेट्स हैव ए लुक ऑन दिस। बहुत बेसिक है ना, वायरलेस सेंसर है क्या, वाई वी आर यूजिंग, वेयर वी इट इज़ डिप्लॉयड, तो एक थोड़ा सा जिस्ट टाइप का है, छोटा सा ओवरऑल कि क्या है, कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है, हमने देख ही रखा है इसको भी जस्ट। सो लेट्स हैव दिस। सो इट इज सेइंग दैट वायर दिस सेंसर नेटवर्क आर हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, अलग अलग जगह पे, है ना, हमने उसको डिप्लॉय कर दिया है और वो हैवी भी नहीं है। सेंसर्स आज के डेट में देखा होगा, इट इज़ नॉट वेरी हैवी, है ना, लाइट वेट होते हैं एंड लाइट वेट नोड्स आर देयर डिप्लॉयड इन, है ना, लॉट मेनी डिफरेंट एरियाज, बहुत ज़्यादा उसके अंदर हम लोग डिप्लॉय कर लेते हैं और दैट इज़ बेसिकली यूज फॉर मॉनिटरिंग पर्पस, है ना। सो आई मीन दैट सेंसर्स आर गोइंग टू यूज फॉर एक्विजिशन, डेटा एक्विजिशन के लिए काम आएगा। एक्विजिशन मतलब जैसे डेटा हम कैप्चर कर रहे हैं और वो कैप्चर करने के बाद वी आर सेंडिंग टू सम ऑफ द नियर बाई सर्वर और यू मे पुट द एंटायर डेटा ऑन टू द क्लाउड, है ना, जो भी आपका सिस्टम है। और बेस्ड ऑन दैट डेटा इट इज़ गोइंग टू एनालाइज। सपोज आपने पूरे दिन का डेटा ले लिया, उसके बेस पे पूरा एवरेज निकाला कि व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द ह्यूमिडिटी, एंड देन अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू डिसाइड वेदर आई एम सपोज टू गो फॉर वाटरिंग इन द फील्ड, है ना, ऑन द नेक्स्ट डे और नॉट। ऑटोमेटिकली ये सारा चीज़ हो रहा है बाय यूजिंग द IoT, है ना, इंटरनेट ऑफ थिंग के थ्रू ये सारा चीज़ चल रहा है। क्लियर? और ये एडहॉक बेसिस पे हो रहा है ना, कि सेंसर मतलब ऐसा नहीं कि फिक्स कर दिया तो वही फिक्स हो गया, है ना। सिंस इट इज़ वायरलेस, तो वायरलेस एडहॉक नेटवर्क में कहीं भी जहां हम लोग डिप्लॉय करना चाहेंगे, है ना, देयर वी कैन डिप्लॉय, कहीं भी उसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इज इट ओके? ठीक है। Yes, और sir. करेक्ट, तो सेंसर जो है वी आर सेंसर से जो भी डेटा वो है दैट वी आर गोइंग टू गो फॉर प्रोसेसिंग पार्ट, और प्रोसेसिंग के बाद फिर वी आर गोइंग टू गो फॉर एनालिसिस। जो भी हम लोग प्रोसेस हमने डेटा को दिया वो एक्मुलेट हुआ, स्टोर किया, फिर उसको एनालिसिस करेंगे बाय यूजिंग एनी सॉर्ट ऑफ मेथड, है ना। आप बिग डेटा का यूज़ कर सकते हैं, मशीन लर्निंग का यूज़ कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली यू आर गोइंग टू एनालाइज, जो भी एनालिसिस हो रहा है उसके बेस पे आप यू आर गोइंग टू टेक सम स्टेप। क्लियर? तो ये चीज़ है, सेंसर सिस्टम होगा, प्रोसेसिंग एलिमेंट होंगे उसके अंदर, और प्रोसेसिंग सपोज डेटा एक्विजिशन आपने किया तो उसको कम्युनिकेट भी करना है ना, टू एंड फ्रो कम्युनिकेट किया और क्या स्टेप लेना है ना, वो भी मुझे देखना पड़ेगा। तो दिस इज कमिंग अंडर दिस पार्ट। ये तीन चीज़ इसके अंदर ऑटोमेटिकली एम्बेड रहते हैं सेंसर के। जहाँ भी सेंसर के बारे में बात हो रही है ये सारा चीज़ हम उसके साथ करेंगे, इज़न्ट इट? और एप्लीकेशन यू हैव ऑलरेडी आई मीन यू हैव ऑलरेडी टोल्ड सम एप्लीकेशन, जैसे आपने बताया था यहाँ पर, जैसे बैटल फील्ड में डिप्लॉय कर सकते हैं, सर्विलेंस सिस्टम के लिए हम लोग कर सकते हैं, है ना, बाय यूजिंग दैट GPS एंड ऑल दैट।
एयर प्रेशर, जैसे आपने कुछ बताया था, ह्यूमिडिटी को नापना है, सॉइल का क्या ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, क्लियर। एयर प्रेशर भी हम देख सकते हैं। तो इससे क्या आगे कि सपोज सम मिस हैपनिंग इज गोइंग टू हैपन, सो अल्टीमेटली ह्यूमन बींग्स आर नॉट गोइंग टू सफ़र, क्लियर। तो एक मशीन होगा या कहीं जहाँ आपने डिप्लॉय किया होगा, है ना, दैट पर्टिकुलर मशीन इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड। तो वो आपको मशीन डिस्ट्रॉय हो रहा है ना। और जहाँ आदमी जाते हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल दे आर गोइंग इनसाइड दिस अर्थ इन ऑर्डर टू चेक वेदर कोल इज देयर और नॉट, कोल माइनिंग्स वगैरह होती है, तो वो क्या होता है कई कई केसेस में, है ना, द गैस आर ऊजिंग आउट फ्रॉम दैट प्लेस, तो उससे है ना देहांत हो जाती, मर जाते हैं कई लोग उस गैस के चलते, आपने न्यूज़ में कभी कई बार सुना होगा। सो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग द ह्यूमन बीइंग, इफ यू आर गोइंग टू सेंड दैट मशीन्स और रोबोट इन दैट सेंस, है ना, जो सेंसर नेटवर्क पे काम कर रहे हैं, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस, क्लियर। अच्छा, नॉइज लेवल वगैरह को आइडेंटिफाई करने के लिए भी होता है। सो लॉट मेनी सेंसर्स आर देयर। इतना ही नहीं, अल्कोहल, सपोज समबडी इज ड्राइविंग विद दैट आफ्टर ड्रिंकिंग दैट अल्कोहल, वो भी अल्कोहल लेवल पे भी बता देगा, है ना, मुंह के पास रखेंगे, दैट सेंसर इज गोइंग टू आइडेंटिफाई कि कितना, कि किस लेवल का अल्कोहल है, कितना % आपने ले रखा है। तो ये सारा चीज़ भी हेल्पफुल हो जाता है ना। दैट मे बी काउंटेड एज वन ऑफ द प्रूफ। मान लीजिए कुछ एक्सीडेंट होता है, चाहे कुछ होता है, तो उस केस में वो देख लेंगे कि ये प्रूफ के तौर पे वो आपको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इस लेवल का अल्कोहल उसने लिया हुआ था। नॉइज़ लेवल कुछ डेसिबल में आपको फिक्स है कि इतने डेसिबल तक आप रात को 8 बजे या 9 बजे या 10 बजे, जो भी जिस गवर्नमेंट ने वो किया हुआ है, उसके ऊपर आप सपोज गाना बजा रहे हैं, है ना, सो नेबर्स आर नॉट हैप्पी, वो कंप्लेन कर सकते हैं कि, और उसको फिर चेक भी किया जा सकता है, अगर किसी के पास सेंसर है तो दैट कैन बी चेक्ड। तो वो सारे सेंसर्स भी हैं आज की डेट में जो नॉइज़ लेवल को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्लियर। और पेशेंट का आपने बता ही दिया, एग्रीकल्चर का दैट इज रिलेटेड, है ना, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ही रखा है एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट में। फाइन, नाउ कमिंग टू दिस, बेसिकली हो कैसे रहा है, जैसे आपने ये सारा चीज़ डिस्कस किया। सो सम सेंसर्स आर देयर, सपोज यहाँ सेंसर्स लगे हुए हैं, एंड दीज सेंसर आर गोइंग टू सेंड द डेटा टू सम ऑफ द सर्वर, नियर बाई सर्वर, कहीं जो आसपास सर्वर होगा वहाँ पर उसको सारा चीज़ सेंसर अपना डेटा देंगे, फिर वहाँ से डिप्लॉय करेंगे क्लाउड पे, दैट इज बेसिकली अगेन द पार्ट ऑफ इंटरनेट पे देंगे। सो इन दैट केस दिस क्लाउड इज गोइंग टू सेव दैट डेटा, है ना। जैसे वो क्लाउड क्या देता है, सर्विस देता है ना, आपने सुना होगा आस पास सास ऐसे करके, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो वो सर्विस इसने दिया क्लाउड पे, और वी आर गोइंग टू स्टोर दैट पर्टिकुलर पार्ट, कहीं उसको स्टोर करेंगे, क्लियर। और स्टोर करने के बाद वी आर गोइंग टू गो फॉर सम माइनिंग, उसकी माइनिंग करनी है, माइनिंग करने के बाद उसका एनालिसिस करना है, एनालिसिस, है ना, व्हेन यू आर गोइंग टू डू सम एनालिसिस ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू यूज प्रोसेसिंग पावर, क्लियर। तो ये सारा चीज़ जब सारा मिला देंगे, एंड देन अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू टेक सम स्टेप, है ना। उस एनालिसिस के बाद कुछ थ्रेशोल्ड आपने किया होगा कि इतने ह्यूमिडिटी के बाद मुझे पंप ऑन करना है, इतने ह्यूमिडिटी के बिलो हमें नहीं करना है, इतना ह्यूमिडिटी हो और इतना टेम्परेचर हो तभी पंप ऑन करना है। जो भी आपने एनालिसिस किया होगा उसके अनुसार, है ना, इट इज़ गोइंग टू टेक सम स्टेप ऑटोमेटिकली बाय यूजिंग दिस इंटरनेट ऑफ सर्विसेज, IoT के थ्रू, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू ये सारा चीज़ प्रोसेस आपका एक्टिवेट हो जाएगा, क्लियर। नाउ लेट्स सी चैलेंजेस, आज की डेट में क्या क्या चैलेंजेस है। स्केलेबिलिटी, क्लियर, कि जैसे सपोज आई एम गोइंग टू इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू, तो जैसे ही डिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो इन दैट केस द सिग्नल इज गोइंग टू बी एटीन्यूएटेड, है ना, वीक हो जाएगा। तो वो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है, क्लियर, कि उसी विसिनिटी में होना चाहिए ये सारा चीज़, क्लियर, या इसका पावर इतना हाई कर दूं कि मैं इससे दूर भी जाऊं तब भी ये कम्युनिकेट कर पाए। अगर हाई पावर करूंगा तो इन दैट केस आई नीड बैटरी, है ना, इट इज़ गोइंग टू बिकम बल्कि, है ना, बैटरी थोड़ा सा हैवी होना मुझे डालना पड़ेगा। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो आज की डेट में चल रहा है सारा चीज़, है ना। कई केस में क्या कर देते हैं कि इसके ऊपर वो सोलर सिस्टम का वो डाल देते हैं, क्लियर, तो वहाँ से जब सनरेज है वहाँ से चार्ज होता रहता है, और नहीं है उसके लिए बैकअप के लिए जो सोलर से चार्ज हुआ है तो वो एक छोटे से उसके सेल को चार्ज कर देता है, अल्टीमेटली फिर रात के टाइम पे ये अपना सेंसर काम कर देता है, मॉर्निंग में फिर वो सनलाइट से यूज़ हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें, है ना, ऐसे साइंटिस्ट आर थिंकिंग ओवर इट, बहुत सारी चीज़ें चल रही है इसके अंदर। सो नेक्स्ट इज थ्रूपुट, है ना,
कितना ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हम जनरेट कर सकें, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा डेटा मैं भेज सकूं, है ना, कम से कम टाइम पे। तो थ्रूपुट भी अच्छा होना चाहिए, स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना, सेंसर्स की, वो भी एक अपने आप में चैलेंज है। द मोमेंट यू आर गोइंग टू इंक्रीज द स्पीड, ऑब्वियसली द क्वालिटी ऑफ सर्विस विल गो डाउन, है ना, दोनों ट्रेड ऑफ है। क्वालिटी ऑफ सर्विस आप बढ़ाएंगे, बहुत अच्छा करेंगे, तब आप स्पीड आपको कम करना पड़ेगा। स्पीड बहुत बढ़ाएंगे डेटा का, तो उस केस में क्वालिटी ऑफ सर्विस आपका खराब होगा, कुछ पैकेट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, सारा का सारा पैकेट नहीं पहुंच पाएगा, तो वो भी एक चैलेंज है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंज, क्वालिटी ऑफ सर्विस। और एनर्जी इफिशियंसी, ये भी एक बड़ा फैक्टर है आज की डेट में। पहले बल्कि मोबाइल्स होते थे, अब डे बाई डे देखिए मोबाइल्स छोटे होते जा रहे हैं, क्लियर। और आने वाले टाइम में हो सकता है जैसे हम लोग चल रहे हैं, तो ओरिएंटेशन हम लोग के हाथ का मूवमेंट के अनुसार वो आपका मोबाइल चार्ज होता जाएगा, है ना। तो अभी चल रहे हैं, ये सारा प्रोसेस चल रहा है कि जो ओरिएंटेशन हम लोग चेंज कर रहे हैं, क्वांटम लेवल पे काम चल रहा है वो सारा चीज़, है ना। जो आपके 4 क्वांटम नंबर्स होते थे, तो वो क्वांटम पे है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, बहुत सारे जो 4 आपके होते थे ना, स्पिन क्वांटम नंबर, तो क्वांटम कंप्यूटिंग पे भी काम चल रहा है, क्लियर। नैनो लेवल पे ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अभी साइंटिस्ट ऐसा खोज कर रहे हैं कि चलते चलते आपका मोबाइल चार्ज हो जाए, है ना, मूवमेंट, आपके हाथ के मूवमेंट के अनुसार वो आपका ऑटोमेटिकली वो चार्जिंग हो जाएगी, क्लियर। सिक्योरिटी पे भी बहुत बड़ा काम चल रहा है कि सेंसर्स को हेल्प, है ना, सेंसर की हेल्प से कैसे और ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी में बढ़ा सकूं, क्योंकि जो भी सेंसर आप डिप्लॉय कर रहे हैं, है ना, दैट इज़ देयर समवेयर इन द मिडिल, है ना, मैन इन द मिडिल, कहीं मैन इन द मिडिल उसको वो कर लिया, वो डेटा हैक कर लिया, उसको एनालिसिस करके फिर आगे वो यूज़ कर रहा है। गेटिंग सर्वेलेंस सिस्टम, सपोज मैंने अपना सर्वेलेंस सिस्टम के लिए लगाया और चाइना इज यूजिंग दैट, उसका पूरा का पूरा डेटा चाइना उसको एक्सपोर्ट करके और अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहा है। गेटिंग, तो ये सारा सिक्योरिटी को भी, कि हमारे सिक्योरिटी को कोई ब्रीच ना कर सके, है ना, उसको ब्रेक ना कर सके, तो उस पर भी, है ना, वी आर वर्किंग ऑन दैट। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। ओके, सो लेट्स स्टॉप ओवर हियर। सो नेक्स्ट टुमारो वी आर गोइंग टू हैव नेक्स्ट क्लास, तो नेक्स्ट क्लास कल कंटिन्यू करते हैं। एनी डाउट इज देयर? इसमें मेरे ख्याल से सब कुछ थ्योरेटिकल था, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज, Yes, sir. है ना। सो लेट्स स्टॉप ओवर हियर। ठीक है, यू मे लीव। Thank you, sir. ठीक है, Thank you, sir. ओके।